सवाल तो रहेगा ना ऐसा वैसे तो हो गया है ट्रिपल ही सी बनाओ थोड़ा सा कर दिया और फिर अब पाकिस्तान दिन चुन्नी जाते हैं तो भी कर रहा ना इसलिए अच्छा जहाँ मैं सबसे ज्यादा पॉपुलेशन थे उनमें तो वहाँ पे उसका फायदा होता है वो जो वीकनेस सबसे स्ट्रॉन्ग किया है पॉपुलेशन को यूज किया है काम में
जनरेटर नहीं चला रहे जनरेटर मुश्किल जनरेटर को चला रहे नहीं मेरे खाली चार इलेक्ट्रिक का सामान आया चिकन आने में पैसे देने हैं आपको वीडियोस में अगर सबसे ज्यादा कमेंट आता है तो वो इस चीज से रिलेटेड आता है कि मनोज भाई 1 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे पूरा करें, क्योंकि आप सबको भली बात पता है कि जब हम लोग ये दोनों चीज कंप्लीट करते हैं तो हम लोग का चैनल मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मतलब क्राइटेरिया पूरा हो जाता है, एलिजिबल हो जाता है मोनेटाइजेशन के लिए। लेकिन दोस्तों मैं तो हमेशा आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि इस चीज के पीछे मत भागो, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आपको पैसा कमाना है तो आपका सिर्फ मोनेटाइज हो जाने से पैसा नहीं मिलता। यूट्यूब पे पैसा मिलता है हम लोगों को व्यूज का, व्यूज आएगा, ज्यादा एड आएगा तो रेवेन्यू होगा। मान लीजिए कि आपका किसी तरह से ये दोनों चीज कंप्लीट कर दिया और उसके बाद अगर आपका हर एक वीडियो में 50 या 100 व्यू आता है तो आपको कोई भी पैसा यूट्यूब पे नहीं मिलता, ना के बराबर 0 पॉइंट कुछ डॉलर मिलेगा, समझ रहे हो। $1 होने में 3 महीना लग जाएगा, तो ऐसे में पैसे नहीं कमा सकते। लेकिन फिर भी आप लोगों का यही मेन टॉपिक है, यही मेन क्वेश्चन है, यही मेन कंप्लेन है कि ये दोनों चीज हम लोग का किसी तरह से कंप्लीट करने का ट्रिक बता दो जिससे हम लोग का चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि मोनेटाइज हो जाने से आप लोग को मिल जाएगा मोटिवेशन, एक मोटिवेशन तो मिलता है, उसके बाद आप आराम से यूट्यूब पे काम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं दोस्तों मैंने सोचा कि ये तो मैं लगभग सालों इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था, लेकिन अभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, एक ट्रिक आया है जिसको अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो आप लोग ये दोनों क्राइटेरिया को पूरा कर सकते हैं। और अभी के टाइम पे ये चीज कोई भी नहीं कर रहा। आज की इस वीडियो में मैं जो भी ट्रिक के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ ये चीज अभी कोई भी नहीं कर रहा और किसी को पता भी नहीं। मैं डिटेल में बताऊंगा वो करना क्या है, उसका एसईओ वगैरह कैसे करना है, कैसे आप वीडियो को रैंक करवा सकते हैं और कैसे ये दोनों चीज आप कर सकते हैं जल्द से जल्द। हो सकता है कि वो 1 महीने में हो जाए, 2 महीने में हो जाए, 3 महीने में हो जाए, ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना कंटेंट बना सकते हैं, कितना अच्छा कंटेंट बना सकते हैं। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखना है, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि वो कौन सा ट्रिक है जिसकी मदद से हम लोग ये दोनों चीज को कंप्लीट कर सकते हैं। ये 100% वर्किंग ट्रिक है, ऐसा नहीं है कि मैं फेंक रहा हूं। अभी आप लोग देखते रहो पूरे वीडियो को, आप लोगों को बहुत अच्छा खासा नॉलेज इस वीडियो में मिलेगा। अभी लोग देखेंगे मेरे चैनल को, तो मेरे चैनल पर आप लोग जाइए और यहाँ पर मैं चलता हूँ पॉपुलर वीडियोस पे। और पॉपुलर वीडियोस पे दोस्तों देखिए मैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाता हूँ जो कि एवरग्रीन कंटेंट होता है। एवरग्रीन का मतलब है कि इस पे व्यूज रेगुलरली आता रहेगा, धीरे धीरे कुछ ना कुछ व्यूज आता रहेगा। और एक दूसरा चीज ये है कि ये सर्चेबल टॉपिक है, एवरग्रीन भी है, साथ में साथ सर्चेबल है। अगर कोई यूट्यूब पे सर्च करेगा यूट्यूब चैनल कैसे बनाए तो मेरा वीडियो आ जाएगा, आप लोग जाकर के सर्च करके खुद भी देख सकते हैं। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने का सही तरीका अगर कोई सर्च करेगा तो मेरा वीडियो आ जाएगा। काइन मास्टर का A to Z वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल कैसे सर्च करेगा तो आ जाएगा। वीडियो पे थंबनेल कैसे लगाएं तो आ जाएगा। ये सारा रैंक्ड वीडियो है, आप कोई भी वीडियो सर्च कर लो यूट्यूब पे मेरा ही वीडियो आपको मिलेगा। फेसबुक पेज बनाना सीखे, फेसबुक पेज कैसे बनाए सर्च कीजिए, मेरा ही वीडियो आएगा। चैनल को सर्च में कैसे लाए, मेरा ही वीडियो आएगा। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कैसे करें तो मेरा ही वीडियो आएगा। तो कहीं ना कहीं ये सब पूरा रैंक किया हुआ है, टोटल सर्चेबल टॉपिक है। वीएन से वीडियो एडिट कैसे करें आप सर्च करके चेक कर लो, मेरा ही वीडियो आपको टॉप पे दिखेगा। तो पूरे ऑल इंडिया में मैंने इसको रैंक करवा लिया है क्योंकि सर्चेबल टॉपिक है, ये सारा टैग रैंक किया हुआ है। अगर आप रैंक जानना चाहते हैं कि कितना है तो इसको हम ओपन करेंगे तो ये बता भी देगा कि कौन सा टैग कितने में रैंक किया हुआ है। अभी आप लोग पूरे वीडियो को देखो, मैं बताऊंगा आपको कैसे ये सब चीज जो है सीखना है, कैसे करना है। तो ये वीडियो को मैंने ओपन किया, यहाँ पर देखिए सारा टैग आपको जो है शो कर देगा, क्योंकि मैंने vidIQ जो है ये जो एक्सटेंशन है इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है जिसमें सारा टैग शो कर देता है। तो इस वाले वीडियो का दोस्तों मैंने देखिए टैग ओपन कर दिया है। इस टैग पे देख सकते हो हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल। अगर कोई सर्च करेगा यूट्यूब पे तो 10 नंबर पे आएगा, क्रिएट ए यूट्यूब चैनल तो 12 पे आएगा, हाउ टू क्रिएट यूट्यूब चैनल तो 6 पे आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं यूट्यूब चैनल बनाने का सही तरीका तो 4 पे आएगा। मतलब सारे टैग्स यहाँ पर रैंक किया हुआ है और ये सर्चेबल टॉपिक है। इसी वीडियो को आप लोग अभी जो देखें कि हमने जो है पूरा यहाँ पर जो भी मैंने वीडियो बनाया है सारा सर्चेबल टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है और सारा टैग रैंक किया हुआ है, जिस वजह से व्यूज आता रहेगा। अब दोस्तों अगर आप लोग इस तरीके का वीडियो बनाएंगे तो रैंक करेगा नहीं करेगा कोई गारंटी नहीं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मेरा वीडियो रैंक किया हुआ है। लेकिन एक ट्रिक आपको लगाना है यहाँ पर। तो अब दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ वो ट्रिक के बारे में कि आपको करना क्या है 4000 घंटे वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के लिए। आपको करना ये है कि आप देखिए यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, मैंने जब वीडियो बनाया है इस वीडियो को आप लोग यूट्यूब पर भी सर्च करो। मैं दिखाता हूँ एक चीज जो आपको अप्लाई करना
करना है YouTube चैनल कैसे बनाए, यहाँ पर हम लोग सर्च करते हैं YouTube चैनल कैसे बनाए। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों जैसे ही सर्च किया YouTube चैनल कैसे बनाए, तो देख सकते हो मेरा वीडियो आ गया और भी बहुत सारे वीडियो यहाँ पर बहुत सारे यूट्यूबर्स का आ गया। ठीक है, इस तरह का आ गया। लेकिन दोस्तों जब मैंने यहाँ पर सर्च किया हाउ टू ग्रो योर यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पर देख सकते हो 2 वीडियो तो आया, पहले योगी जी का, फिर उसके बाद उसके नीचे देखिए जस्ट यहाँ पर आपको शॉर्ट्स भी देखने को मिल रहा है। 2 मेन वीडियो के बाद यहाँ पर लॉन्ग वीडियो के बाद आपको शॉर्ट्स ही शॉर्ट्स दिख रहा है। और अभी के टाइम पे दोस्तों लोग जो है शॉर्ट्स को ज्यादा देखते हैं, क्योंकि शॉर्ट्स में क्या है 30 to 1 मिनट के अंदर में, 30 सेकंड टू 1 मिनट के अंदर में ही आपको डिटेल जो है मिल जाता है, जो भी आपको इंक्वायरी है, जो भी आप सर्च करें। लेकिन यहाँ पर जब मैंने सर्च किया यूट्यूब चैनल कैसे बनाए, तो यहाँ पर कोई भी शॉर्ट्स नहीं आ रहा। आप नीचे जाओ, ये देखो नहीं आएगा। अगर आप शॉर्ट्स पे यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे तो हो, यहाँ पर शॉर्ट्स पे मैं गया तब भी देखिए बहुत मुश्किल है, मतलब आ रहा है 2-4 आ रहा है, लेकिन वो वाला टॉपिक नहीं आ रहा चैनल कैसे बनाए। I've been using the new ChatGPT 5 for the last few days. This will, starting today, become your default ChatGPT from now on, even if you're a free user. So, how is it better? Well, the first thing you'll probably notice is speed. So, this laptop has the previous model, GPT-4o loaded up. This has GPT-5. How many rings does Saturn have? Go! Oh my god. GPT-5 took 3.1 seconds. This took 6.5. How many distinct iPhones has Apple made? Go. Oh goodness. Okay. 8.3 seconds, 11.2 seconds. How many possible type combinations exist in Pokemon? Not far off. Actually, quite far off. This has massively overcomplicated it. 5 seconds, 11 seconds. So really, when you're asking light questions like this, GPT-5 is between 30 to 50% faster than the old model. But I wouldn't really say that speed was one of the key issues before. There's actually a much more important change happening this generation. So if you're a really big user of ChatGPT and you're paying the monthly subscription, it's actually been really freaking confusing to use. Because you open up the app and you have options. You can either pick GPT-4o, O3, O3 Pro, O4 Mini, O4 Mini High, and each one of these models is its own AI that you can talk to. And each one is slightly better than the others at one thing or another. And there's even more than those when you click here to expand. How on earth is any normal consumer supposed to be able to decide which one to use for which question? I've always wondered, if this AI is actually smart enough to be in the top 10% of test takers sitting the most grueling exams on the planet, why can't it also just know what's the best model for your specific question and make the choice for you? Well now, finally, GPT-5 can. This model effectively brings together all the different capabilities of the previously separated specialized models into one general model, which means if you ask it a question that requires no thinking, then as we've seen, it will use a very light model that's going to be even faster than the old one. But it also means that if you then ask a heavier question that would benefit from more thinking, it can now do that thinking without you needing to specifically select a mode designed for it. So let's try something very complex. Make me a game of Tetris that I can play in Canvas. This is going to mean I can actually play it on the app. So I'm doing this first on the old ChatGPT 4o. This is the best model that you'd have had cases of an AI. We're approaching 200 lines of code. Okay, that took 57 seconds. And okay, it's very simple. This is like the most basic possible form of Tetris, but I suppose at the same time, I have just entered one sentence and generated a game. So now I want to try the exact same thing, but using O4 Mini High. So this in the previous generation is the model that would have been specifically recommended to you for coding. And you can only get this by paying the monthly subscription. Go. Oh, blumming out, this is significantly faster. It's done already. What? That was 14 seconds. And the game is actually almost identical to what ChatGPT 4o produced, just in a quarter of the time. Okay, let's try it on 5. And the thing that I'm curious to see here is, A, does it decide that this is something that would benefit from more thinking time and take longer? If it does it then make it better? Go. I'd say it's coding slower than O4 Mini High, but still faster than 4o. Okay, that was actually pretty fast too. 19 seconds. Interestingly, more lines of code than both of them. So it seems like it is making a more complex game. That is like worlds apart. So it's the same game, but the pieces now have divides in them. It's giving me a score. It's giving me a level. It's showing me the upcoming piece. There's controls at the bottom. Like, okay, don't get me wrong. None of this is something that you couldn't have achieved using previous ChatGPT models, but it's just the fact that it had the intuition to bake it all in completely unprompted that's quite impressive. Yeah, so
vastly better game of Tetris. While we're here though, let's just do something crazy. So using 04 Mini High, make me a playable game of chess where the pieces are all Pokemon with sprites from the internet and make it look premium so that the sprites fill up the squares. Go. An error occurred while trying to run your game. It's very cool that you can ask it to fix its own bugs, but in my experience, there's a low success rate. And enter. Loading this time. Error again. Come on, third time lucky. Ah, yes, finally. It doesn't look terrible. I mean, it has gone out and picked up Pokemon images from like the very first games in the 90s. And also, it doesn't work. Give me an error message every single time I touch a piece. Same thing in GPT-5. Go. I rate that. You see, it specifically said thinking longer for a better answer. And thinking longer, it absolutely is. This has taken like 3 times longer than 04. It's actually a little bit crazy just to what extent it's going a simple command. Like you can see it coding in like themes and all of these Pokemon and like seemingly an entirely new rule set that themes chess itself to Pokemon. I'm actually so curious what it's cooked up here. Oh, wow. Oh my God, that is a world apart. It's the exact same thing at the Tetris. It's like an implicit understanding of what makes the game look more premium. So if I click a piece, okay, it not only works, but it also highlights all of the legally available moves that you can make with that piece. It tells you whose turn it is at the top here. It is actually just leagues ahead of last gen. Right now, at least, GPT-5 is feeling a lot less like a sidekick that's useful, but only useful in so much as you have the coding knowledge yourself to be able to fix it. But okay, coding is still obviously a bit of a niche use. The thing that I would say is most useful to the most people for AI is just making sure that it's right. Hallucination has been a very real issue with AI. This ability of these chatbots to tell you with full confidence and a straight face something that is actually completely incorrect. And let's be honest, suddenly going to be fixed in one generation. I think it's better. Thanks to a combination of more powerful hardware running this AI, integration, user feedback from the older models, as well as just better ways to benchmark AI, and therefore better ways to identify places in which it's lacking. So put all these things together, it should mean ChatGPT-5 doesn't get things wrong as much. Let me try one that I know ChatGPT used to struggle with, because I was asking it this 2 days ago. Give me 10 tech products made by food brands that I can actually buy. So this is Toforo, McDonald's X T-Mobile phone. I'm very skeptical. This is not a thing. McDonald's did not make a phone with T-Mobile. And then it's got the KFC gaming console, which you definitely can't buy. You see what I mean, right, though? It just invents stuff with complete confidence. Let's see if 5 is any better. I'm a little skeptical. Coca-Cola mini fridge. Okay. Oreo made smart speakers. Did they, though? To be honest, GPT-5 is not doing any better of a job than 4 was. It is still inventing stuff, so this still does need work. Here's another one here that used to really trip up the older AI. What AI are you? It just gives me gobbledygook. What about here? What AI is this? I mean, a much more human-oriented answer. This is ChatGPT with the GPT-5 model. I specifically asked the question in a slightly obtuse way to see if it could still figure out my intentions, and this did. Right. For me, GPT's been pretty good, but also pretty inconsistent when it comes to creative tasks. So I want to give both of these something that is extremely challenging to pull off. Make me a YouTube thumbnail for a Mr. Who's the Boss video titled I tested every Star Wars gadget ever. Off you go. And it's pretty clear why this is such a challenge. It's got to do my face. It's got to understand the YouTube thumbnail image size. It's got to decide what out of all these potential Star Wars gadgets is the most clickable to an average user. Right, so 4.0 first. Second one's not bad. It actually has me holding like a Star Wars blaster and a lightsaber. That's pretty good. I'm just quite cursed, and I don't think those are products you can buy. They're just objects from the universe. What have you done? I would actually say that's worse. It's a little bit less good composition. The text isn't as Star Wars-y, and it's a square. YouTube thumbnails have to be 16 by 9. What if you were planning a 30th birthday party and you want it to be Star Wars themed? How well can these make the invitations? Addressed to Rick, 7 p.m. to 11 p.m., Star Wars formal attire. And go. Oh, this is taking a real long time.
That's actually so good. It's Vader in a suit. It's just the right level of sophisticated for a 30-year-old who happens to still be doing a Star Wars party. Maybe you could have cut one of these Star Wars logos, but apart from that, GPT-5's is actually really bland. It just looks like so much less effort has been put into that than 4.0. So it's hard to make a sweeping conclusion based on just a few tests, but one thing's pretty clear. GPT-5 is not a step up when it comes to image generation. But one thing that OpenAI is saying GPT-5 should have for sure is better writing flair, which is actually one of the things I've noticed lacking in the older models. They've always felt a little bit wooden, kind of like they're focusing on getting you an answer as opposed to actually thinking about the delivery of that answer. So how about we do the old how soon will I be jobless test? Write me a 30-second Mr. Who's Lost Tech fail about the Windows Phone. 3, 2, 1, go. Okay, these are actually quite different looking answers. Okay, let's do the 4.0 one, and you got to tell me how close this gets to feeling like I've made it. You ever hear the phrase, great idea, wrong decade? That was the Windows Phone. In 2010, Microsoft launched a slick, fast, super stable phone OS that nobody wanted. Why? No Instagram, no Snapchat, no YouTube app. Even the calculator felt like a cry for help. They tried paying developers to make apps, didn't work. They bought Nokia for $7.2 billion to boost hardware sales, still didn't work. Then they deleted Nokia. By 2017, Windows Phone had just 0.1% market share. Microsoft's official advice, switch to Android or iPhone. To me, that feels about what you'd expect. I feel like it's not quite done the best job of picking the parts of that story that were the most important to tell. Also, the calculator on Windows Phone was actually pretty great, so not at all a reason it failed. The cool thing about this GPT-5 answer is it not just has the script, but it also has notes for how to film it and what B-roll shots we should be using to show each line. So this is the Windows Phone, Microsoft's big attempt to take on iOS and Android. It looked different, it felt different, and it failed spectacularly. Turns out having no apps in 2012 was like opening a restaurant without food. Developers didn't bother, customers didn't care, and Microsoft just gave up. By 2017, the dream was dead. And now, the only thing it's good for is being a retro paperweight. Rest in peace, Windows Phone. You tiled too close to the sun. It's good. I'd say still needs work, but that's actually a much better starting point. And it's using analogies in a way that actually makes you think, great point. So ultimately, GPT-5 is not better at every single thing, but it's still one of those tech launches that's pretty hard to complain about. Like, it's clearly a lot better in a lot of ways. They've integrated all the complexity into one simple model. So they're going to start to phase out the whole, this model for coding and this model for reasoning. The monthly subscription is staying the same price. And also you still get access to GPT-5, even if you're not paying. There are a couple of asterisks. If you're not a paying user, then it is capped. You'll get, say, 8 to 10 requests per day using the most powerful GPT-5. And it's looking like when you go beyond that limit, you will then use a less powerful, but still more powerful than last generation GPT-5 Mini.